अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू में भली कार मां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, पाण ग्लोबल रिव्यू में आलमी सियासत या आलमी वाक़िअनि जे हवाले से डिस्कस कंदा आहियूं। अॼु जे प्रोग्राम में पाण पहिरियां डिस्कस कंदासीं। प्रोग्राम के पहिरें हिस्से में रूस में थींदड़ जेका फ़ौजी बग़ावत है उन हवाले से त रूस और यूक्रेन में हलंदड़ जंग का पोइ काफ़ी कोशिशुनि खां पोइ बि इहा जंग जेका है इन वक्त अञा ख़त्म न थी चुकी आहे, न थी सघी आहे। ऐं हिन वक्त ख़बरूं ये साम्हूं पियूं अचनि त फ़ौज में जेको रूस में यो वेगनर जंगजू जेके आहिनि उन्हनि पारां जेका है बग़ावत साम्हूं आई आहे। इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। अॻूणा सफ़ीर जनाब ज़फ़रुल्ला शेख साहब असां गॾु मौजूद आहिनि। ज़फ़रुल्ला शेख साहब, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ॿुधाइजो त ही रूस पारां एतिरी ताक़त जो मुज़ाहिरो कयो पियो वञे यूक्रेन ख़िलाफ़, त इन सूरत हाल जो नतीजो सम्झो था अवां त इहा जेका फ़ौजी बग़ावत साम्हूं आई आहे, या अवां सम्झो था त इहो आलमी जेके कुछ एक्टर हूंदा आहिनि उहे पंहिंजो किरदारु अदा पिया कनि इन जंग खे डिस्टर्ब करण जे लाइ या पंहिंजो असर रसूख़ वधाइण जे लाइ? अञा ही जेको आहे इहो पंहिंजो आर्मी रशियन आर्मी जे में रिवोल्ट न आहे, बिकॉज जेके वैगनर जो आहे इहो मर्सिनरी ग्रुप आहे हिकिड़ो जेको 2014-15 खां वठी जेको ऑपरेट कंदो थो अचे। इहो अफ्रीका में बि ऑपरेट कयो आहे, चैड में ऑपरेट कयो आहे, लिबिया में कयो आहे, ऐं इहो हिकिड़ो प्रॉक्सी रशियन फोर्सिस जे हिसाब सां कनि। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु हुई त रशिया हुननि खे माल मसालो ॾींदो हुयो त हो हुन जे करे कमु कंदा हुया। हाणे इहा हिकिड़ी पुराणी चेचनि खां वठी जेको हुन जा लीडरशिप हलंदी थी वञे, जेको आहे हाणे लीडर जो जेको आहे प्रेगोजिन जेको आहे उहो हुनजो लीडर आहे। हिकिड़ो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी आहे हिकिड़ी। इहा बेसिकली रेगुलर रशियन फोर्सिस जो हिसो न आहे, पर नेचुरली रशिया वारा इन्हनि खे जेको आहे उहो सपोर्ट कंदो हो। पुतिन गवर्नमेंट इन्हनि खे सपोर्ट कंदी हुई त जंहिंमें हुयो जीअं हाणे जॾहिं यूक्रेन में जॾहिं अटैक थियो हुयो त ईस्ट में जॾहिं डोनेक्स में सॼो त हिननि बाक़ाइदा रशियन फोर्सिस सां गॾु गॾु हिननि पंहिंजा बि कया हुया। मुखबित में जेको हुयो उते हुननि कंट्रोल कयो त उते बि हिन जी सपोर्ट साण हुई सॼी। हलंदे हलंदे हलंदो आयो। हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि वञे हिते की हे जेको जहिड़ो हाणे थियो आहे उहो बेसिकली ही जेको हिन जो लीडर आहे मर्सिनरी फोर्स जेको आहे पंहिंजो वैगनर मर्सिनरी फोर्स जंहिंखे असां हे चवनि था पिया, ऐं इहा प्राइवेट मिलिट्री कंपनी आहे। इहे चवनि था त जेकी रशियन मिलिट्री लीडरशिप आहे उन्हनि जनरल्स जो हिननि जो पाण में थी पियो आहे जहिड़ो। हाणे हो हिनखे लिफ्ट कोन था कराइनि या ॿियो कुझु अंदरूनी का कोल्ड वॉर हिन जी पहिरियों पे हली, ऐं हो हुनखे ब्लेम था कनि, हो हुनखे ब्लेम था कनि पिया। त नेचुरली हाणे हो रशिया आर्मी जा जेके रेगुलर जनरल्स आहिनि उहे नथा चाहिनि त ही जेको आहे प्रोक्सिनी जेको आहे पंहिंजो वैगनर ग्रुप जेको आहे इहो ज़्यादा प्रोमिनेंट थिए। छो जो इहे काफ़ी रशियन खे हिननि मदद बि कई आहे, यूक्रेन में मदद बि कई आहे, जाते काथे मदद कई आहे हिननि खे वठण में। हाणे वञी इहा ॻाल्हि वञी थी आहे त हुननि ते हाणे हिक ॿिए खे इहो जेको टेंशन क्रिएट थियो आहे त रूसी जेके रेगुलर आर्मी जा जनरल्स हुया उन्हनि वरी हिननि जे फोर्सनि जे मथां अटैक कयो आहे, रॉकेट अटैक। इहो जेको हिन जो लीडर आहे वैगनर ग्रुप जो जेको ब्लेम थो करे त हीअ जेकी रशियन मिलिट्री लीडरशिप आहे इहा पंहिंजे हिन ब्यूरोक्रेसी जे करे करप्शन हिन जे करे पंहिंजे ॾेखारण जे करे इहो कमु ख़राबु कयो अथऊं। ऐं इन ते वरी प्यूटिन जेको हाणे वरी अनाउंस करे छॾियो आहे त इहा म्यूटिनी आहे, इहा बग़ावत आहे ऐं इन जे ख़िलाफ़ एक्शन खयो वेंदो। उहो वरी नेचुरली रेगुलर फोर्सिस खे थो करे। पर हाणे हक़ीक़त में छा आहे त हीअ जेको वैगनर मर्सिनरी फोर्स जेका नओं न आहे, इहो पुराणो आहे ॾाढो। हिन में कोई 50,000 माण्हू आहिनि। इहे पुराणा प्रिजनर्स ऑफ वॉर हुया जेके वरी ॿाहिरि निकिता हुया पहिरियों US प्रिजन्स मां, ऐं उन्हनि हिकिड़ो इहो फोर्स ठाहियो, ग्रुप ठाहियो, ऐं इएं ग्रुप ठाहे करे ऐं रशियन फोर्सिस सां गॾु गॾु वञनि पिया वेठा। हाणे जेको आहे इहो पाण में हिन जी वेड़ थी आहे। असल में हाणे भउ हुनखे इहो आहे रशिया खे त जेको असांखे बि लॻे थो, जेको मूंखे लॻे थो त रशिया इज़ हेडिंग टुवर्ड्स अ सिविल वॉर। छो जो तमामु घणा आहिनि, नंबर्स में घणा आहिनि, ऐं हे एंटर बि थी चुका आहिनि। रशिया खां कोई हाणे जेको आहे ऑस्ट्रो हेॾे जेके परसिमा उन शहर मां निकिरी करे रशिया जे बॉर्डर ते आहिनि, तमामु उते तमामु उन्हनि उहो कंट्रोल बि करे वरितो आहे। त हाणे बेसिकली चिकताइण शुरू थी वई आहे रेगुलर रशियन आर्मी ऐं वैगनर मर्सिनरी फोर्स। इहा सम्झ में जेकॾहिं अची वञे कंहिंखो, इन करे मां बैकग्राउंड तव्हांखे ॾिनो। इहो केसि ताईं हाणे हलंदो, हिन जो बेसिकली हेडक्वार्टर सेंट पीटर्सबर्ग में आहे हिन जो वैगनर फोर्स वारनि जो, ऐं हिन जी ग्रुप में जो लीडर ई अलॻि आहे। हे हिकिड़े क़िस्म जी प्रॉक्सी सम्झो त रशियन फोर्स आहे, बट दे आर नॉट द रेगुलर रशियन आर्मी न आहे। हाणे हुन ते पुतिन चयो आहे हिन जे ख़िलाफ़ एक्शन खणंदासीं ऐं बग़ावत जा केस हलंदा हिन जे मथां, ऐं जेको आहे नेचुरली उहो पंहिंजे आर्मी खे सपोर्ट थो करे, ऐं रशिया जा जेके रेगुलर आर्मी जा जनरल्स आहिनि उहे हिन जे ख़िलाफ़ आहिनि। हाणे इहा पाण में वेड़ शुरू थी वई आहे। केसिताईं वेड़ अॻिते हलंदी? मूंखे लॻे थो इहा वेड़ हलंदी रहंदी।
काफ़ी हलंदी अंदरि ऐं इन में काफ़ी जेको आहे मॉस्को ताईं मथां पहुची वञे। मॉस्को वारनि पाण जेको आहे काफ़ी इन्हनि जेको आहे एहतियात कयो आहे। एंटी टेररिज़म जेके आहिनि सॼा हुनजा सिक्योरिटी मेजर्स जेके आहिनि उहे खणनि था पिया। छोजो हे बाक़ाइदा जंगवी आहिनि, बाक़ाइदा सॼी हर शइ ॼाणनि आहिनि। ट्रेंड जेके माण्हू आहिनि, जेके मर्सिनरी चल आहिनि, हिननि खे हाणे हिनखे भउ आहे। हाणे लॻे थो त इहो जहिड़ो वधंदो घटंदो कोन। हे चए थो त असां मार्च टुवर्ड्स जस्टिस आहे, हो चवनि था या म्यूटिनी आहे, बग़ावत आहे, रशिया वारा चवनि था। मर्सिनरीज़ चवनि था त न, असां करप्शन खे ख़तमु कंदासीं, हे जेके मिलिट्री लीडरशिप आहे हिनखे हटाईंदासीं। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, इहो ॿुधाइजो त इहो जेको रूस पारां इन शइ खे बग़ावत चयो पियो वञे त इन जा जंग ते केतिरा असरात थी सघनि था यूक्रेन सां जेका हलंदड़ जंग आहे रशिया जी? हक़ीक़त बग़ावत जी ॻाल्हि न आहे, इहो मिसहैंडलिंग थी आहे। मूंखे जेको लॻे थो हाणे त इहा मिसहैंडलिंग थी आहे रशियन मिलिट्री लीडरशिप खां। उनजे मिलिट्री लीडरशिप ऐं जनरल हिननि जे विच में कुझु टिक टिक थी आहे, ऐं जिते हिननि वरी उन्हनि उते अटैक बि कयो आहे। हिननि जे मर्सिनरी फोर्सिस जे मथां बि कुझु रॉकेट बि हयां अथऊं। हे चवंदा त असां न हयो आहे। हाणे इहो जेको सॼो जेको सिलसिलो हलियो आहे, त जेको तव्हां मूंखां सुवाल पुछो आहे, इहो अॻिते हली जेको आहे सिलसिलो इहो वधंदो। पोइ हिते हटिजंदो कोन। रशियन्स जी हिस्ट्री रही आहे, हे बि तमामु मर्सिनरी थिया आहिनि, पुराणा जेके जंगजू आहिनि बाक़ाइदा, ऐं हे त काफ़ी आहिनि जाइनि ते आहिनि, ऐं काफ़ी हिन जो जेको नंबर तमामु वॾो आहे। ईअं न आहे त घटि आहे नंबर हिन जो, काफ़ी कुझु 50-60 हज़ार जो नंबर आहे हिन जो। सॼो पकड़ियल आहिनि, बाक़ी अफ्रीका में सॼा पकड़ियल आहिनि, हिते रशिया में पकड़िजी विया आहिनि, अंदरि रशिया जे कंट्री में अंदरि बि आहिनि। हाणे रशिया जो जेको M4 जो हाईवे हिन जो आहे, उते बि अधु ताईं वञी करे अॻिते हलिया विया आहिनि। त रशियन गवर्नमेंट खे इहो आहे त हीअ हाणे अंदरि अची अटैक कंदा ऐं एंटी टेररिस्ट अटैक थींदियूं। इन जे लाइ पुटिन खे ॾाढी गणती आहे। पुटिन चयो त हिकदमि मां एक्शन खणंदुसि ऐं हिननि खे न छॾींदासीं, जेको हे रिजेक्ट था कनि मर्सिनरी फोर्स वारा। अच्छा ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, इहो ॿुधाइजो त अव्हांखे इहो नथो लॻे त माना इन में को आलमी जेके ताक़तूं आहिनि उन्हनि जो को हथु हूंदो, या अव्हां सम्झो था त जेका अव्हां ॻाल्हि हिन वक़्तु ॿुधाई आहे, जेका शयूं अव्हां डिस्कस कयूं आहिनि, तव्हांखे लॻे थो त इहो जेको आहे अंदरूनी मामिलो आहे, इन में के आलमी सियासत या आलमी ताक़त शामिल न आहे? ॾिसो, दुनिया में जेके बि ॾिसो यूक्रेन में जंग हले थी पई, बेसिकली वेस्ट अमेरिकन्स इहे सभु जेके आहिनि अॼुकल्ह रशिया सां विड़ी रहिया आहिनि। ऐं नेचुरली यूक्रेन जी वॉर में हे जेके वेगनर मर्सिनरी फोर्स वारा हुया, हे जेके आहिनि, इहे रशिया जे फोर्सिस सां गॾोगॾु बाक़ाइदे उनखे विड़ी रहिया हुया, रूस सां गॾु लॻोलॻ, ऐं हिननि खे हथियार बि मिली रहिया हुया, ऐं हिननि मदद बि हिननि जी कई, ऐं बाक़ाइदे हिननि जेके आहे वसाब जेके रीजन हुननि में मदद बि कई। हिनखे काफ़ी यूक्रेन जा हिसा हिननि बाक़ाइदा कया। नेचुरली हाणे छा आहे त जेके इंटरनेशनल फोर्सिस आहिनि, जंहिंमें जेके एजेंसीज़ आहिनि, CIA आहे, ॿिया आहिनि, सिटियूं आहिनि, उहे बि मॉनिटर त कनि थियूं न त केरु केरु आहे। उन्हनि खे त ख़बर त हुई त हे आहिनि। थी सघे थो त उन्हनि बि को रोल प्ले कयो हुजे, पर अञा उभरी न आयो आहे। न को रशियन्स अहिड़ी का ॻाल्हि कई आहे, न को हिननि चयो आहे, छो जो हिननि जो पंहिंजो फोर्स तमामु वॾो आहे। पर मूंखे लॻे थो त जॾहिं बि का जंग थींदी आहे, को झेड़ो थींदो आहे, त उन में अंदरि जेके फोर्सिस जेके आहिनि उनखे जेको इहा हाइब्रिड वॉर हलंदी रहंदी आहे। अच्छा ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, हिन वक़्तु जेकॾहिं जंग जी ॻाल्हि कजे रशिया ऐं यूक्रेन जी, त उन जो स्टेटस छा आहे? छाकाणि त मीडिया में का एतिरी ख़ासि कवरेज हाणे उनखे रही न आहे, त अव्हां छा था सम्झो त या उन लेवल ते ई जंग अञा जारी आहे जंहिं लेवल ते इहा शुरू थी हुई? जंग अञा हले थी पई। अञा कल्ह टोड़ी जो बि तव्हां ॾिसंदव त रॉकेट अटैक्स थिया आहिनि कीव ते। बाक़ाइदा पुटिन जेको आहे उहो पंहिंजो जेको आहे इहो उहा जेके रशिया जेको आहे उहो पंहिंजो कंटिन्यू रखी वेठो आहे, कीव ते अटैक करे रहियो आहे बाक़ाइदा जेको आहे। इन करे जेको आहे, पर हाणे हीउ जेको नओं इशू थियो आहे, इन खे हाणे बि मुंहुं ॾेई रहियो आहे, पर हिनखे भउ ज़रूरी आहे। इन करे पुटिन चयो आहे त असां हिनखे न छॾींदासीं, इहा बग़ावत आहे। ऐं बग़ावत इन सेंस में चयो आहे त हे हिनजे रेगुलर आर्मी जा त न आहिनि, पर यानी जेको हुयो अंडरस्टैंडिंग हुई उन सां बग़ावत कई अथऊं। इहो लफ़्ज़ इहे चया वेंदा त असांखे यानी पुठीअ में छुरो घोपियो वियो आहे। त चवण जो मक़सदु आहे हिक ॿिए खे कनि था पिया। इहो बि थी सघे थो त हलंदे हलंदे इहा शइ ख़तम बि थी वञे, मथां किथे वञी ठाह बि थिए, पर मूंखे नथो लॻे त हेॾो ठाह थींदो, छो जो ॻाल्हि तमामु अॻिते वञी चुकी आहे। जहां तक यूक्रेन वॉर जो आहे, वॉर ऑन आहे, ऐं बाक़ाइदा जेको आहे उहा वॉर हले थी पई। कीव ते बि अटैक थिया आहिनि, ताज़ा अटैक थिया आहिनि, रशिया करे थो पियो, रशिया खे काफ़ी नुक़सान बि खणणो पियो आहे काफ़ी। अॼु हाणे हीअ वरी जेको पॉइंट आहे, हाणे हिन में जेको आहे
इहो ॾिनो वीक स्पॉट जेको हथ में आयो आहे। कुझु ॾींहंनि खां पोइ ख़बर पवंदी त रशिया जेको आहे हाणे यूक्रेन ते उनजो जेको आहे हथु आहे या उनजो जेको प्रेशर आहे उहो केतिरो रहंदो या न रहंदो, इहा अञा ख़बर तॾहिं पवंदी जॾहिं कुझु मुंहिंजो ख़्यालु आहे कुझु ॾींहं गुज़रंदा। अॼु जेका रूस में इहा शइ जेको एक्सीडेंट पेश थियो आहे जंहिंखे रशिया जेको आहे बग़ावत थो चए, छा इहो जंग खे थोरो घटाइण में या जंग जे ख़ात्मे वारी साइड वञण में मददगार साबित थी सघे थो? मददगार साबित न थींदो, इन में फ़ाइदो थींदो त जेकॾहिं कंहिं कीव जेको आहे यूक्रेन वारा जेकॾहिं ऐं जेके वेस्टर्न फोर्सिस आहिनि उन मां जेकॾहिं को फ़ाइदो वठणु चाहिनि था त उहो फ़ाइदो वठंदा। ऐं उहो मूंखे लॻे थो त इहे सपोर्ट कंदा जेके मर्सिनरी वैगनर मर्सिनरी ग्रुप जेको आहे प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, इन्हनि खे सपोर्ट करण जी कोशिशि कंदा त भले इहा रशियन मिलिट्री फोर्सिस सां वधीक थियनि ऐं इहे कोशिशि कंदा त रशिया जे अंदरि जेको आहे टेररिस्ट अटैक्स थियनि ऐं हे उते रशिया जे अंदरि जेके रशिया जे अंदरि वञी पखिड़िजी वञनि। इहो ई हिकिड़ो ख़ौफ़ आहे। इहो थी सघे थो त यूक्रेन जे मथां जेको असली जेको असल सॼो प्रोग्राम आहे अटैक जेको रशियन फोर्सिस कनि था पिया उनजी शायदि थोरो असर जेको असर थी सघे ज़रूरु उनजो घटिबो हिन में। ऐं मूंखे लॻे थो त हिन मां यूक्रेन वारा ज़रूरु फ़ाइदो वठनि। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, ज़फ़रुल्लाह शेख साहब असां गॾु मौजूदु हुया ऐं सूरत हाल इहा आहे त रशिया ऐं यूक्रेन जी हलंदड़ जंग जंहिंखे तक़रीबन 2 साल थियण वारा आहिनि, इहे इन जंग में हिन वक़्त ताईं केतिरो ई नुक़सानु थी चुको आहे, पर इहा जंग ख़तमु अञा न थी सघी आहे। मुख़्तलिफ़ मुल्कनि पारां कोशिशूं कयूं पियूं वञनि त इहे मामलात हल थी वञनि ऐं इन जंग जे करे पूरी दुनिया हिन वक़्तु मुआशी मुश्किलातुनि जो शिकार आहे। हिन वक़्तु जेको दुनिया में मुआशी तौर ते जेके ॾुखियाइयूं पेश अची रहियूं आहिनि उन जो हिकु कारण मां असां चई सघूं था त रशिया ऐं यूक्रेन जी जेका जंग आहे उनजो नतीजो आहे। पर हिन वक़्तु जॾहिं रशिया ऐं यूक्रेन जी जंग हलंदड़ हुई त उन में अॼु जेके वेगनार जा जेके जंगजू हुआ उन्हनि पारां जेको आहे बग़ावत कई वई आहे, जंहिंखे सदर प्यूतन पारां बग़ावत ई चयो वियो आहे। संदसि चवणु आहे त अहिड़े अमल सां जेको रूस जो मुस्तक़बिल आहे उनखे ख़तरो थी सघे थो। त इन सॼी सूरत हाल ते ज़फ़रुल्लाह शेख साहब पंहिंजो तजियो पेश करे रहिया हुआ। प्रोग्राम जो सिलसिलो पाण जारी रखंदासीं। ते वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं अमरीकी परॾेही वज़ीर जे चीन जे दौरे जे हवाले सां, जंहिंमें हुन गुज़िरियल जेको आहे आचर वारे ॾींहुं चीन जो दौरो कयो आहे, पर उन में का ख़ासि पेशरफ़्त न थी आहे। अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं चाइना ऐं अमरीका में कशीदगी वधंदी पई वञे, इन सूरत हाल में अमरीकी परॾेही वज़ीर जो चाइना जो दौरो इंतिहाई अहम हुयो ऐं उन में छा मुमकिनात ॻाल्हियूं हुयूं जेके हू अॻिते वधाए पे सघिया, पर उन्हनि में पेशरफ़्त न थी आहे। पाण इन सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। मूंसां डॉक्टर ख़ुशबू साहिबा मौजूदु आहिनि। पाण इंटरनेशनल अफेयर्स जूं एक्सपर्ट आहिनि। डॉक्टर खुशबू साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि एक तरफ पूरी दुनिया में ये बातें जुबान ज़द आम हैं कि अमेरिका और चाइना में कशीदगी बढ़ती जा रही है, और ऐसे वक्त में अमरीकी जो वजीर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उनका चाइना का दौरा आप किस तरह देखते हैं कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट है दोनों ममालिक के लिए और खित्ते के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बहुत अहम मौजू पे बात करने के लिए, इनवाइट करने के लिए। असल में जो इस वक्त ब्लिंकन साहब पहुंचे हैं चाइना, तो उसमें उसके पीछे कुछ इलाकाई और कुछ उनके कह लें इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ से जाना पड़ा। हाल ही में आपने देखा कि मोदी साहब पहुंचे हैं अमेरिका, और उन्होंने जाके अच्छी एक कह लें कि बाइडेन के टाइम पे उनसे मुलाकात हुई है। तो इस इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और मिडिल ईस्ट में स्पेशली जो असर और रसूख बढ़ रहा है चाइना का, उसकी बैकग्राउंड में आप कह लें कि जो मिडिल ईस्ट में चाइना का असर और रसूख बढ़ रहा है, प्लस जो लैटिन अमेरिका में चाइना का असर रसूख बढ़ रहा है, वहाँ पे चाइना और हॉन्डुरस और ब्राज़ील ने बताया कि हम वन चाइना पॉलिसी के ऊपर हम मुत्तफिक हैं।
اس کے علاوہ جب وہاں پہ ون بیٹ روڈ کی جو انیشیٹو اسٹارٹ ہوا تو وہاں پہ ان کی فنڈنگ جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں جو پورے جو پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے امریکہ کو یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ اپنی کشیدگی کو ختم کریں. اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی ٹریڈ وار چل رہی ہے چائنا کی اور امریکہ کی, اس کی وجہ سے بھی بہت مسئلے آ رہے ہیں جو کہ جس کا افیکٹ جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کے اوپر بھی آ رہا ہے. تو ان سب حالات میں جو جب دنیا اپنا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے تو چائنا کے ساتھ بات چیت کرنا شنگریلا ٹاکس کے بعد بہت زیادہ ضروری ہو گیا امریکہ کا کہ یہاں پہ آنا اور اس سسٹم میں آ کے چائنا کے ساتھ اپنا جو ہے ایک تعلقات کو نارملائز کرنا یہ ان کی ایک ضرورت بن چکی ہے. جیسے کہ ہم دیکھیں کہ ان کی جو ٹریڈ وار ہو رہی ہے اور اس میں مین پرابلم جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کا اور کاپی رائٹ کا ایشو اور باقی جتنے مسائل آ رہے تھے اس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ٹک ٹاک کا امریکہ نے جیسے بند کر دی, جیسے چائنیز اپلیکیشن جو ہے وہ بند کر دی, ہواوے جو ہے اس کو بند کر دیا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہمیں نظر آ رہی ہیں جن کی جو اکنامک پہلے کانفلکٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا, اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ 4 ماہ قبل یہ دورہ ہونا تھا لیکن نہ ہو سکا کیونکہ دونوں کے حالات اتنے کشیدہ ہو چکے تھے کہ یہ دورہ ممکن نہیں تھا. لیکن اس دورے میں بھی کوئی اہم پیش رفت سامنے نہیں آ سکی, کسی حتمی نتیجے پر یہ دونوں ممالک نہیں پہنچ سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے دوروں سے یہ جو تناؤ کی صورتحال ہے یہ کم ہو سکتی ہے یا بے سود رہتے ہیں اس طرح کے دورے جب حالات اس طرح کے ہوں؟ فیبرری میں آنا تھا جی بلنکن صاحب نے وہ نہیں ہے اور وہ ان کا ڈیلے ہوا اور اس کے پیچھے بہت سی چیزیں جیسے بائیڈن نے پریزیڈنٹ شی کے لیے کہہ دیا کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہے. تو اس طرح کی جب آپ الزامات لگائیں گے دوسری لیڈرشپ کے اوپر تو وہ آپ کے جو ایک نارملائزیشن کی طرف آپ کے ریلیشن جا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کا ایک آپ کہہ لیں ایک دھچکا لگتا ہے ایسی گفتگو سے, ایسے الزامات جب آپ لگاتے ہیں. تو اب اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا اسپیشلی چائنیز میڈیا وہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ بائیڈن نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور پھر آپ اگر کیونکہ ان کو اپنے لوگوں کو بھی جواب دے ہونا ہے کہ جب ایک آپ کے پریزیڈنٹ کے بارے میں اس طرح کے جذبات رکھ رہی ہیں امریکن لیڈرشپ تو آپ ان سے کس طرح کے ان پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو کافی اس وقت جو حالات بن رہے ہیں آکس اور کواد اور جس طرح سے امریکہ نے ایک جارحانہ طریقہ اپنایا اس علاقے میں تو اس کی ہم دیکھیں کہ ڈی ڈالرائزیشن بھی سٹارٹ ہو گئی. اس کا ریپرکاشنز یہ ہوئے ہیں کہ چائنا نے جو ہے وہ اب رشیا کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں تو یوان میں ٹریڈ کر رہے ہیں وہ, اور پوری انڈیا کی ایون کے کرنسی انڈیا نے کہہ دی ہے کتنے 18 ملکوں میں ان کی کرنسی یوز ہوگی. تو اس وقت جو ہے امریکہ کو اتنی مالی مشکلات کا سامنا ہے کہ یہ ان کے لیے مجبوری ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہتر کریں کیونکہ چائنا کے جو چائنیز پروڈکٹس ہیں جو سستی ہیں اور ان کے عوام تک بھی پہنچتی ہیں اور باقی اور بھی آپ کہہ لیں کتنی سطح پر اس کو دفاعی سطح پر اکنامک اور پولیٹیکل ان کو اس وقت جو ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ جارحانہ پالیسی اپنائیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایسی صورتحال میں جہاں پوری دنیا ان کوششوں میں مصروف ہو کہ دونوں ممالک میں یہ جو ٹیمپریچر کا رائز ہے اس کو کم کیا جائے, ایسی صورتحال میں وہ ممالک خود ایک دوسرے کا دورہ کریں تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے بہتری کے تعلقات بڑھ سکتے ہیں؟ اور آپ اس پر بھی اپنا کمنٹ دیجئے گا کہ کیا اب آنے والے دنوں میں آپ سمجھتی ہیں کہ چائنا اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں گے اور چائنا کا کوئی اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ امریکہ کا دورہ کر سکتا ہے تاکہ تعلقات بہتر ہو سکیں؟ جی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اگر چائنا نے مدد کر کے سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات بہتر کیے ہیں تو کوئی بھی کسی وقت بھی لیڈرشپ کو خیال آ سکتا ہے کہ ہم نے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے تو بھی ہو سکتا ہے. اور 4 مہینے جو لگے ہیں وہ اس وجہ سے لگے ہیں کہ جو ایک اسٹیٹمنٹس ایک لیڈر نے دوسرے لیڈر کے بارے میں دی اور جو ٹریڈ وار چل رہی تھی اس کے بیک ڈراپ ہوا ہے. جب آپ کو انٹرنلی آپ ویک ہوتے ہیں, آپ کا انٹرنل جب آپ کہہ لیں آپ کو کمپلشن ہے ان کو کہ ان کو ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی تو وہ جا رہے ہیں. تو جب آپ کو مجبوری ہوا ان دا نیشنل انٹرسٹ
किसी वक्त भी कोई भी किसी के साथ मिल भी सकता है और ताल्लुकात चेंज भी हो सकते हैं। तो आप इसके बारे में खतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि कभी भी नहीं कोई चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं जाएगा अमेरिका या बाइडन नहीं आ सकता। ब्लिंकन आ गया तो नेक्स्ट अगर वो ताल्लुकात को बेहतर और करना चाहेंगे तो ये हो भी सकता है, पॉसिबल भी है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ताइवान के हवाले से अमेरिका का एक अलग जो है वो मौक़िफ़ है और वो उनको ताइवान को जो है एक खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क समझते हैं। तो आप समझते हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच में सबसे बड़ा जो इख्तलाफ है वो ताइवान है या उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो इनके इख्तलाफ की वजह बनती है? ताइवान तो मेजर इशू है, बाकी साउथ चाइना सी है। उसके अलावा अभी जो इनमें मसला आ रहा है वो आ रहा है इनका जो आप कह रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी और उसके अलावा ट्रेड से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं वो सबसे बड़ा इशू है। अभी करंटली अब देखें ताइवान इज देयर, ताइवान की हैसियत भी है, ताइवान के इलेक्शन के ऊपर भी अगर आप देखें वो चाइना को प्रॉब्लम है और चाइना ने जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ जाके बात की है उनके ऊपर उनको ये ऑनडरस और प्लस इसको ब्राजील से ये कहलवाया है कि उनको वन चाइना पॉलिसी पे वो करते हैं। तो चाइना अपना कर रहा है। प्लस जो आप देखें कि चाइनीज जो बैंकिंग सेक्टर है वो वहां तक रसाई आ रही है। तो हमें ये चीजें नजर आ रही हैं कि वो बात पहले अपनी ये बनवाते हैं। पाकिस्तान के साथ भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान को ये कहना पड़ता है कि जी हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो फिर आप आगे चलते हैं। चाइना इस बारे में बड़ी उनकी सख्त पॉलिसी है कि इसके बाद तो आगे वो तो मतलब उनके कहने की जीरो टॉलरेंस है फॉर कि वो इसके सिर पे कमी हटते। और वो जब भी यूएस के साथ भी बातचीत होगी, आप E3 क्राइसिस की अगर अब मिसाल दें 2001 में जो जहाज का हुआ इंसिडेंट, तो अभी भी जो ये फरवरी में इशू है वो जो चाइनीज बैलून चला गया और मतलब वो उन्होंने कहा अमेरिकन ने ये किया कि फाइन के लिए आ रहा है, तो उसकी वजह से इश्यूज आए। तो E3 क्राइसिस जब हुआ था 2001 में, तब भी हम देखते हैं कि क्यों पीछे हट गए अमेरिका भी और चाइना भी कि जंग की तरफ नहीं गए। तब भी लिखते रहे थे बहुत से एनालिस्ट कि जी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी और ताल्लुकात खराब होंगे। तो दोनों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी थे। अभी भी जब जो अमेरिका को अपने अंदरूनी उसके हालात नहीं ठीक हैं, इकोनॉमिकली इनको प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो वो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके उस तरह से कर सकते हैं, आप कह लें कि कंसंट्रेशन। डॉक्टर साहब आखिर में ये फरमाइएगा कि अगर चाइना और अमेरिका के बीच में ये कशीदगी ना होती तो आप समझती हैं कि रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रही है उसका कोई ना कोई नतीजा निकालने में ये दो अहम ममालिक अपना किरदार अदा कर सकते पॉजिटिवली? जी यहाँ तक रशिया और यूक्रेन का मामला है, वहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि रशिया ने ना चाइना की बात माननी थी ना अमेरिका की बात माननी थी। उनकी अपनी एक नेशनल इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं कि उस इलाके को अपने साथ में लाएं जो यूक्रेन का उनका पार्ट है। उनकी एक चांस है कि इट इज आवर लैंड एंड वी हैव टू अनेक्स इट। तो वो नहीं ख्याल के इनकी सालसी या वो चीज़ों को वो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, यूरोपियन यूनियन का कुछ रोल हो सकता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी आपको नजर आता है कि वो भी बिल्कुल रशियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज नहीं हो पा रही। जिस तरह से भी उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं उस पर भी रशिया पीछे नहीं हट रहा। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन डॉक्टर खुशबू साहिबा संगत मौजूद हुयूं ऐं हिन वक्त जका सूरत हाल है इलाके जी जिनमें चाइना ऐं अमेरिका में जका ताल्लुकात जी बहतरी के लिए मुख्तलिफ मुल्कन पारां कोशिशूं कयूं पियूं वञूं। उन सूरत हाल में अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर जो जको चाइना जो दौरो हुयो उनके इंतहाई अहमियत ॾिनी पई वञे, पर बदकिस्मती सां ॿिन्ही मुल्कन में का बि अहम पेशरफ़्त न थी सघी आहे ऐं अमरीकी परॾेही वज़ीर जो जेको इस्तक़बाल हुयो उन मां ई इहा ॻाल्हि वाज़े हुई त चाइना को ख़ासि रिस्पॉन्स जेको हो उहो अमेरिकन परॾेही वज़ीर खे न ॾिनो। इन करे त ॿिन्ही मुल्कनि में जेके हालात आहिनि उहे इंतिहाई कशीदगी इख्तियार करे चुका आहिनि। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफाक़ अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।